વધીએ આપણી સાથે જે મેનેજમેન્ટ અત્યારે જોડાઈ રહ્યા છે ખાસ રિઝલ્ટ્સની ઉપર ચર્ચા કરવા માટે લેટન્ટ વ્યૂ એનાલિટિક્સના મેનેજમેન્ટ છે કંપનીના સીએફઓ રાજન વેंकटेशन જોડાયા છે આપણી સાથે રિઝલ્ટ્सની ઉપર चर्चा करवा માટે सर शुक्रिया। सबसे पहले तो ये क्वार्टर कैसा था, कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाएं, उसी से मैं शुरुआत करना चाह रही थी। ये क्वार्टर के दौरान क्या क्वार्टरली हाइलाइट्स थी और क्या फैक्टर्स रिपोर्ट कर रहे थे, कुछ बेसिक डिटेल्स। हाँ, तो आपने सही कहा, ईयर ऑन ईयर जो परफॉर्मेंस रहा है तो ऑलमोस्ट 48% ग्रोथ रहा है इन Q4 कंपेयर टू Q4 ऑफ लास्ट ईयर। इवन सीक्वेंशियली आप देखेंगे जो रेवेन्यू ग्रोथ हमने जो रिकॉर्ड किया है, इट्स क्लोज टू अबाउट 9% इन द करंट क्वार्टर कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर। और आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारा जो Q3 रहता है, which is Q4 in the US, which is the largest market for us, that is typically our strongest quarter. And the fact that we were able to sequentially grow 9% even over our Q3, which is traditionally our strongest quarter, shows the robust demand environment at this point in time. So काफी अच्छा quarter रहा from a revenue standpoint, from a demand standpoint. Margins पे भी आप देखेंगे, margins for this quarter specifically was at about 30.5%. पूरे साल का जो अगर EBITDA margin देखेंगे, that was at 29.9 or close to about 30%. आप हमारा जो पहले का गाइडेंस देखेंगे, जो हम इनफैक्ट पहले से बता के आ रहे हैं कि आप लास्ट ईयर जो रहा है, लास्ट ईयर वाज एन एक्सेप्शनल ईयर बिकॉज फ्रॉम अ मार्जिन स्टैंड पॉइंट, ट्रैवल, मार्केटिंग स्पेंड्स, ये सब जो अदर एसडीएन या ओवरहेड्स है, ये काफी कम थे इन FY21, क्योंकि there was, because of COVID, there were restrictions on travel, there was restriction on conducting marketing events. तो ये सब चीजें थी जो which boosted the profits in FY21। जो हमारा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल EBITDA मार्जिन प्रोफाइल है, जो हम पहले से गाइड करते आ रहे हैं कि 25 to 28% is the sort of range that we've operated in historically। इस साल के लिए, पूरे साल के लिए देखेंगे तो close to about 30% पे ऑपरेट किया है, which is fairly healthy margin levels, and we are quite happy with the results that came out। अग्रीड सर। अच्छा, उसके अलावा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी सेक्टर के हाईएस्ट रेवेन्यूज ऑलरेडी विटनेस कर रहे हैं, कोई मेजर चेंजेस आपने रेवेन्यू मिक्स में अगर किए हैं, कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाएं, और साथ ही क्योंकि सेगमेंटल डिस्कशन कर ही रहे हैं तो सीपीजी भी किस तरीके से ग्रो कर रहा है, एक आइडिया इसके ऊपर। नहीं, सीपीजी रिटेल आपने बिल्कुल सही कहा। हमने इस साल जो है स्पेसिफिकली 2 वर्टिकल्स हैं जो which have still contributed। टेक्नोलॉजी obviously is already a very large vertical for us, and the technology vertical on a year-on-year basis grew by about 38%। but जो CPG retail specifically देखेंगे, वो जो सेक्टर है हमारे लिए 113% it has grown in FY22 compared to FY21, and there we see that some of the investments जो हमने किए हैं in terms of people, in terms of capabilities, in terms of building out accelerators and solutions, all of that is bearing result, and therefore we believe CPG and retail will be a very important vertical for us going forward। We've also very recently brought on board a business head to drive our retail focused analytics practice। तो हम कंटिन्यू करेंगे investments in both these verticals। BFSI again will be one very strong vertical for us, or hopefully it will be a strong vertical for us in FY23। There again, some of the investments that we've made in the last year, they are beginning to show results। So we are fairly excited about both BFSI as well as CPG and retail। These should be promising sectors for us in the coming fiscal। अग्रीड सर। और इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, वो कैसे आप कोट होते हुए देख रहे हैं, यहाँ से चीज़ें दिख कैसे रही है, एक आइडिया इसके ऊपर, क्योंकि स्पेशली आईटी कंपनीज के ऊपर थोड़ा बहुत असर हम लोगों ने देखा है। एक आइडिया अगर मुझे आप दे पाएं, इसको कम्बैट करने के लिए कैसे स्ट्रैटेजीज रखेंगे। देखिए, इसको हम जो है, हम ऑब्वियसली हम भी क्लोजली वॉच कर रहे हैं यश जी। नॉट दैट इट डजंट मैटर टू अस, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम दो चीज है। सी वन, हमारा जो कंपनी है आज के डेट पे, वी आर इन अ वेरी हाई ग्रोथ, इवन विद इन द लार्ज ब्रॉड बेस्ड आईटी सर्विसेज, वी आर इन अ वेरी वेरी नीश स्पेस विच इज डेटा एंड एनालिटिक्स, विच कंटिन्यूज टू ग्रो फास्टर as more and more businesses get more digitally native, and they communicate with their end customers through digital channels। जो डेटा एनालिटिक्स का पार्ट है, द स्कोप फॉर डेटा एनालिटिक्स keeps increasing, the market or the overall pie for data analytics continues to grow, and we at this point in time, हमारा ये मानना है कि हम we are just scratching the surface। तो आगे का जो रनवे है काफी ज्यादा है।
और आपने ये सही कहा कि from a macro standpoint, yes, there is a lot of uncertainty there. Obviously, inflation is one big key concern. Secondly, the war still continues to go on, right? So these are uncertainties that continue to play out. But हमारा ये मानना है कि even in times of adversity, right? It is actually a very, very good time. For instance, even in the US, आप देखेंगे, there is a big talent shortage at this point in time for people to hire quality data engineers, for instance, or data scientists. Companies are finding it extremely difficult to hire that sort of talent, and therefore we believe that we are in a very strong position at this point in time to take advantage of this talent shortage as well. आप देखेंगे हमारा we continue to do a lot more work offshore as opposed to on-site. And we believe that in times when there are inflationary pressure on margins, companies would look to outsource even more. And therefore, we believe that from a long-term standpoint, there could be fairly positive outcomes for us even from this situation. But we continue to watch the situation quite closely. Not that we are taking our eyes off it. We will continue to watch the global macro indicators. But at this point in time, we feel we are in a strong wicket. अग्रीड. और इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी वाइज परफॉर्मेंस, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कशन में आपने बताया यूरोप की कंडीशन जिस तरीके से थोड़ी वोलेटाइल हो रही है, किस तरीके से वहां से ग्रोथ एक्सपेक्टेड है? तो आप यूरोप जो है हमारा आज के डेट पे ओवरऑल फ्रॉम अ कंट्रीब्यूशन स्टैंडपॉइंट इट कंट्रीब्यूट्स टू अबाउट 6 to 8% of our overall revenue. So it's actually quite small in the overall scheme of things for us, but we are making investments again. Like they say, the last couple of years we made a lot of investments on building out specific capabilities or domain capabilities around BFSI retail. This year we will add another layer to it. We will bring in specific people to head our European businesses. We are already beginning to make some of those investments, and we believe that these investments, obviously you will not see the full benefit of it in this fiscal itself, but we want to set it up right so that the next few years we continue to see a lot of gains in the European market. जो हमारे जो 3 subsidiaries हैं यूरोप में, they are in UK, Germany as well as Netherlands. ये तीनों subsidiaries जिन countries में located हैं, यहाँ पे almost 70 Fortune 500 companies हैं. So there is ample scope for us to ramp up our presence in these markets as well. We continue to make investments. Hopefully, Europe in a couple of years should be anywhere between 15 to 20% of our overall revenues. That is the expectation, or that is the aspiration that we have for ourselves. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया